What's up, everybody? Welcome to my fourth episode of DIVYANSHOW. My name is DIVYANSHOW Malik, and I am a digital marketer by profession. So, with my show, I am bringing you the best of knowledge directly from the experts, of course, from digital marketing. And today we are discussing all about digital entrepreneurship. आप कैसे पैसा online कमा सकते हो? It is really possible. And my guest will going to tell you कैसे आप business scale कर सकते हो, कैसे you can be your own boss. You can be an Indian entrepreneur. आप ऑनलाइन सेल करो, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, कैसे सारे हम उस पे आज बात करने वाले हैं. So welcome Tanmay. Today we have with us Tanmay Nijhawan, who is an expert in setting up all sales funnels, setting up the business strategies, and he has been helping Indian entrepreneurs setting up businesses online. So over to you, Tanmay. Thank you for being here and so obliged to have you. Please give a little intro about you. Thank you. First of all, thank you. Thank you very much, Divyanshow, for having me. I really appreciate what you do for the community. It's a And I pleasure to be here. appreciate that people like you support me either, like for giving the knowledge to our audiences, and they can be the best in their field. Absolutely. Yes, Absolutely. It's a pleasure to be here. pleasure So, for me too. Yeah, please, Sun. Please introduce so, yourself a little bit to my audience. I am normal digital marketer. I started my journey about 2 or 3 years back in digital marketing. I started watching a ton of videos online. I started getting introduced to digital marketing. I didn't know exactly what it was initially. As I started learning more and more about it, I fell in love with it. I started taking online courses. I started taking mentorships from different people. And then I finally reached a place where I am now working with all the people that I wanted to work with. So in the beginning of 2020, I made a list of about 7 or 8 people that I really wanted to work with in 2020. Wow, And I can proudly say that I've at least worked with 6 out of the 7 people that I wanted to work with. that is So all of amazing. this, yeah, absolutely. So all of this has happened because of digital marketing, because of all these mentorship programs that I've been in, all these other coaching programs that I've been in, and people who have helped me along the way. So this is basically who I am. I have one business called Mental Lab India, where I have partnered with the original shark from Shark Tank, Kevin Harrington. I have partnered with James Smiley, who was also my mentor at one stage and still Wow. is. And I always wanted to do something with him. Uh, so it's a pleasure to be connected with him. We also have a wonderful other partner called Raj, who has tremendous experience in entrepreneurship. So we started that business in 2020. We are coaching on Indian entrepreneurs with digital marketing, online marketing, sales funnels, and all the other things that we talk about. And I have also worked with a lot of other Indian and international influencers and corporates and try and help their businesses scale online. Okay, I am listening कि अभी और आएगा. So guys, आज जो हमारे साथ बैठे हैं ये काफी काम कर चुके हैं जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स है, तो एक्सपीरियंस तो आपको तगड़ा मिलने वाला है. अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करने वाले हो ऑनलाइन, सो वी हैव द राइट पर्सन विद अस, राइट तन्मय? तो क्या हम सच्ची में ऑनलाइन कमा सकते हैं? लाइक वी कैन सेल एवरीथिंग और एनीथिंग ऑनलाइन? सो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑनलाइन इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड ऑनलाइन कैसे सेल किया जाता है. बट देन राइट. इफ यू सी ऑनलाइन ऑफलाइन की तरह ही है. लाइक ऑफलाइन इफ यू आर गोइंग टू अ मॉल, राइट, ऑनलाइन वी कॉल इट अ वेबसाइट, राइट, जहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड होंगे. In newer terms, Russell Brunson has made this term really famous, which is funnels, right? So so we have an online funnel जहाँ, और ऑफलाइन के लिए सपोज मॉल ले लो जहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, राइट. फिर हम लोग ट्रैफिक भेज रहे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक कैसे भेज रहे हैं? SEO से भेज सकते हैं, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, राइट. सो सिमिलरली हम लोग ऑफलाइन करते हैं. ऑफलाइन में हम लोग टीवी एड्स देते हैं, बिलबोर्ड एड्स होती है, राइट, न्यूज़पेपर एड्स होती है, वर्ड ऑफ माउथ होता है. सो सिमिलरली उसके बाद मतलब ये दो बिजनेसेस काफी सिमिलर है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो. And then the sale finally happens on the website, right? So people get confused a lot and people complicate this a lot because there's a lot of information out there. But then ultimately it's the same thing, right? और अगर ऑफलाइन में कोई चीज सेल हो रही है तो ऑनलाइन में क्यों नहीं होगी फिर? बिल्कुल. So it's similar.
Great. That is awesome. So you need to find the ways, and there are so many things you can actually use this mobile, this laptop, and that tools to, get your reach to the audience, right? You can get, Right. you can find the right prospects for your business. So, Right. Tanmay, there is so much noise in the market in this digital era. Everybody is writing like digital entrepreneurs. चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, कोई अपनी वीडियो बना रहा हो, चाहे वो ब्रांड अवेयरनेस कर रहा हो, चाहे वो अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहा हो. So everybody is writing digital entrepreneurs. Like everybody has that knowledge. किसको सुने हम मार्केट में? Who to listen to? So this is a really interesting question क्योंकि इतने सारे लोग हैं मार्केट में. There are Right. people who are in all मतलब age ऐसा categories. ऐसा बना दिया कि it's a piece of cake. Like अब Right. digital entrepreneur लिखो and you can start earning. मतलब हम किसको Right. follow करें? Like who to listen to? So there are a lot of people in the market. So मैं कभी भी देखता हूँ कि who should I listen to. So I watch a lot of their free content. मैं देखता हूँ कि उनका knowledge और expertise किस चीज में है. Then I try and choose, what stage am I at, तो अगर मैं अपना business start कर रहा हूँ तो क्या मुझे directly mentorship में जाना चाहिए या फिर मुझे courses लेने चाहिए. So अगर मैं सिर्फ start कर रहा हूँ तो I would much rather prefer to have, courses, much rather prefer to do courses rather than choose a mentor. Because अगर मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेंटर भी मेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा, राइट? सो दैट्स व्हाट आई लुक एट, व्हाट स्टेज ऑफ द बिजनेस एम आई एट. बहुत सारे लोग ऑनलाइन पिच कर रहे हैं आपको, बहुत सारे लोग आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसमें से देखना चाहूंगा कि कौन से लोग क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या मैं उनसे रिलेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा. वो जो चीज कर रहे हैं क्या मुझे उस चीज में सही में इंटरेस्ट है या नहीं है. एंड देन आफ्टर आई फिगर्ड आउट ऑल दीज थिंग्स, उसके बाद मैं 2 या 3 लोगों पे नील डाउन करता हूँ क्योंकि दीज आर द 2 or 3 पीपल दैट आई वांट टू लर्न फ्रॉम. एंड देन मैं देखता हूँ कि क्या ऑफर्स है बेस्ट मार्केट में, मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है. एंड देन आई सी देयर एक्सपीरियंस, देयर बैकग्राउंड और क्या बोल रहे हैं वो. बिकॉज लॉट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जो स्टोरीज ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं, अब तो सब कुछ यही हो गया कि यार पहले मैं बहुत कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, या पहले मेरे पास पैसे नहीं था, नाउ आई हैव मेड दिस लाइफस्टाइल जहाँ पे मैं 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी हो कमा रहा हूँ. And I've done this just by doing digital entrepreneurship, just by selling online courses. So ये जितनी भी चीजें होती हैं तो मतलब मैं उसमें देखता हूँ, जाता हूँ डेप्थ में कि कौन से लोगों की स्टोरीज मैचअप हो रही है, कौन से लोगों की नहीं हो रही, कौन से लोगों ने क्या क्या एक्सपीरियंस लिया है प्रीवियसली एंड मुझे किस डायरेक्शन में जाना है. सो फॉर एग्जाम्पल आई टॉक्ड अबाउट कि मेरा मेंटर जेम्स स्माइली था, especially in digital marketing. So I saw his background. His background was he has done a lot of corporate work too. He has worked with 48 of the Fortune 500s. He has sold almost, I think, more than $210 million in online products. Grown 2 businesses from $0 to $20 million. So amazing. I saw that. Then I saw कि उनका content किस type का है. Do I relate with his content? And वो initially एकदम hit कर गया कि this is exactly the person I want to learn from. And then I went into his mentorship program, coaching program. So this is how it started. So these are just some simple steps that I follow, but there's no fixed step-by-step procedure that you have to follow. You just have to try and testing out things. Yeah. And what works on your way, right? So Tanmay, for selling online, like we have to look for. Okay. Are we good, Tanmay? It's okay. Should I send you water? No. Okay. So Tanmay, as we see, so people who are starting online for their businesses, how to look? Is there some research work they have to do for their services? I'm asking for, or they can sell anything, like any service or any product, or there is some research work they have to do. Okay, that this would be a perfect fit product for the market right now, and you can go online now. So when is the right time, and what are the right type of services you would suggest? Like how to find your niche? So these are a lot of different questions combined in one. So yeah, these are yeah. So starting with number 1, when we talk about do we do any research when we are actually trying to sell a product? Absolutely. Right. Absolutely. That's step number 1. If we don't do this, then it's just like कि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बना देते हैं एंड में जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, अगर हम लोग रिसर्च नहीं कर रहे.
So we always do a lot of research, लोग क्या sell कर रहे हैं, क्या price points चल रहे हैं market में, right? उनके क्या क्या offers है, कौन से products hot है, कौन से markets बहुत ज़्यादा hot है. And then based on that, we see, okay, this is something that's selling really well. ये market है जहाँ पे बहुत सारे customers हैं. Now, how do we introduce our own product? How do we market our own product in that Exactly. specific market that we actually get customers from their side to actually on our side? So Right. there's a lot of research that goes into it, and that's step number one, and that is the most important step according to me. So वहाँ पे हम लोग start करते हैं. Then we get more towards the kind of product that we want to build. हमारा किस type का product होगा? क्या वो product online sell होता भी है या नहीं? So by that I mean कि online भी बहुत different type के funnels होते हैं. एक होता है कि you are directly selling through a sales page, या फिर आप webinars के through sell कर रहे हो, या फिर आप website के through sell कर रहे हो वहाँ पे ads डाल के. But then बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग टाइप के फनल्स होते हैं. इसका मतलब ये है कि ऐसी भी इंडस्ट्रीज है, सपोज B2B इंडस्ट्री, राइट, वहाँ पे हम लोग लीड जेन जो होता है वो ऑनलाइन करते हैं. बट देन व्हाट वी ट्राई टू डू इज मीट देम फिजिकली, और we try to get them over a phone call or a Zoom call these days because of COVID. But that's another type of fun, right? So हम लोग देखते हैं कि what's a proper mix and match between online and offline, and how we can actually what are some of the things that we need to do online, right? And काफी terms में ये भी होता है कि हम लोग online सिर्फ अपनी branding करते हैं काफी corporates के लिए, right? And then online हम लोग कुछ sell नहीं करते, सिर्फ branding करते हैं. And then we try and get customers message us, right? Right. उनके messages आते हैं, then we get them on over a phone call or we text message them, and then we see if it's the right fit, and then हम लोग sell करते. So it completely depends on different types of products, and all of this information comes from the first step, which is the research that we do. Research part, right? Right, absolutely. So how to, like, the people who are watching us, they don't know कि हमें sell करना ही कैसे है. Okay, they have their services, but वो research कैसे करें? We need to give them the right information from the very start, from the very basic. So वो कैसे research कर सकते हैं तन्मय? Like research करने का मतलब क्या हुआ कि मतलब कैसे research करें? क्या मार्केट्स में जाके सबको हम पूछें ओके हम ये ऑनलाइन बेच सकते हैं कि नहीं, या फिर क्या, या ऑनलाइन कुछ टूल्स हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं कि यहाँ जाके हम देख सकते हैं ओके ये सर्विस कैसा कर रही है? लिटिल बिट, थोड़ा बहुत इसमें अगर हम इनसाइट दे सके अपनी ऑडियंस को. Sure. So ऑनलाइन में देखता हूँ कि कौन से मार्केट लीडर्स हैं, राइट? वो मार्केट लीडर्स जो हैं, 2 या 3 मार्केट लीडर्स होंगे आपकी इंडस्ट्री में, वो कैसे सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, उनकी कितनी बड़ी कम्युनिटी है. सो बहुत सारे केसेस में कम्युनिटी भी बन जाती है, जैसे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, लिंक्डइन ग्रुप्स होते हैं, राइट? सो कम्युनिटी बन जाती है, उसके अंदर क्या मैसेजेस, उसके अंदर उनके कस्टमर्स होते हैं, उसके अंदर नॉर्मल लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड है उस कम्युनिटी में रहने के लिए. सो बेस्ड ऑन दैट वी ट्राई एंड सी कि कौन से ग्रुप्स ऑनलाइन फॉर्म हुए हैं जो हमारे टारगेट ऑडियंस है. सपोज अगर मैं जा रहा हूँ ऑनलाइन कोर्सेज की इंडस्ट्री में, सो मैं देखूंगा कि अच्छा ये 2 या 3 मार्केट लीडर्स हैं, इनके प्राइस पॉइंट्स क्या है, राइट? उनके प्राइस पॉइंट्स बहुत विजिबल होते हैं उनकी वेबसाइट्स पे, या फिर आप उनके वेबिनार्स अटेंड कीजिए, जैसे भी वो सेल कर रहे हैं, जस्ट सी हाउ दे आर ट्राइंग टू सेल. बहुत ज्यादा रिसर्च उधर करना पड़ेगा. देन यू गो इनटू देयर फेसबुक कम्युनिटीज, आप देख रहे हो कि उनका प्रोडक्ट क्या है एग्जैक्टली, लोगों को क्या वैल्यू मिल रही है. देन आप उसमें से ये भी देखते हो कि लोगों को क्या क्या वैल्यू नहीं मिल रही, राइट? एंड देन जब आपका सेल्स मैसेज आप बनाते हो, देन यू एक्चुअली टेक केयर ऑफ what are the things that your competitor is not fulfilling, and then you actually form an offer, and वहाँ से आपका प्रोडक्ट का एक बेटा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है. सो वहाँ से एक बेटा प्रोडक्ट बनता है, देन वी ट्राई एंड सेल इट टू आवर बेटा कस्टमर्स. सो हम लोग 15-20 डिपेंडिंग ऑन व्हाट आवर प्रोडक्ट इज, उसमें हम लोग एक फर्स्ट बैच रखते हैं, ग्रुप ऑफ बेटा कस्टमर्स. Then we try and give our absolute best knowledge to them. Then based on their feedback, हम लोग product improvise करते. Then we get to a final product and then we relaunch it. So this is one way of doing what we do. Okay. So मतलब we need to go and find what we are now going to start. जो पहले से मार्केट में है उनको जाके रिसर्च करना जरूरी है. सपोज अगर आप जिम ओनर हो तो जाके जिम ट्रेनर्स को देखो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो रोज नए अपने वीडियोस ही डाल रहे हैं, या फिर कोई नया प्रोटीन लेके आ रहे हैं, या वो नए कोई ऑफर्स लेके आ रहे हैं. सो वी नीड टू थिंक्स ऑल दैट थिंग्स इन माइंड, लाइक
अपने Right. माइंड में लेके, अपनी कॉपी में, नोटबुक में लेके हमें अपना फनल तैयार करना है. सो जो हमने अभी फनल काफी सुना अभी हमने, तो ये तो हमें पता चला कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन जा रहे हो तो. सो व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेलिंग ऑनलाइन देन, लाइक एज वी टॉक अबाउट फनल्स आल्सो. So again, like I said, online is the same as offline. There are three things. Number one is traffic. Number Right. two is the sales funnel, and number three is sales, right? So number one, हम लोग start करते हैं जब research हो जाए, and then उसके बाद we have finally thought, this is the kind of product that we want to create. Then we actually start building a funnel, right? Okay. तो उसका जब funnel हम लोग build करना start करते हैं तो हम लोग वो research जो already हुई है बहुत ज़्यादा काम आती है. हमें पता चलता है किस type का हमें funnel बनाना है. Okay. कि वो वेबिनार के थ्रू सेल करेंगे, या फिर हम लोग एक सेल्स पेज के थ्रू सेल करेंगे, या फिर सिर्फ ऑनलाइन लीड जेन करेंगे एंड देन फोन से सेल करेंगे. सो वो सब पता चलता है. एंड देन फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस हमारे फनल बनने की स्टार्ट होते हैं. हमारा सेल्स मैसेज क्रिएट होता है, हमारा ऑफर क्रिएट होता है. राइट. देन हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ट्रैफिक सेंड करना स्टार्ट करते हैं. सो रियली इंटरेस्टिंग थिंग दैट पीपल यूजुअली डू ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री में हम लोग देख लें, ऑनलाइन कुछ भी सेल करना है तो हम लोग फेसबुक प्रोफाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. सो हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं कुछ भी तो हम लोग फेसबुक प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं. द रीज़न बीइंग कि ट्रैफिक लाने में जो हमारा स्पेंड होता है, राइट, सो इनिशियली सबको वो चीज़ स्पेंड नहीं करनी होती, राइट. जब तक हम लोग प्रोडक्ट टेस्ट नहीं कर रहे, जब तक हम लोग देख नहीं रहे कि हमारा सेल्स मैसेज एक्चुअली हिट कर रहा है नहीं कर रहा. सो व्हाट वी ट्राई एंड डू इज हम लोग अपनी फेसबुक प्रोफाइल को एक फनल में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम लोग वहाँ से ट्रैफिक भेजना स्टार्ट करते हैं. सो जो फेसबुक प्रोफाइल है वो एक फ्री प्रोफाइल है, राइट. सो हम लोग वहाँ से लिंक्स वगैरह डालते हैं. उसमें बहुत अलग एक एस्पेक्ट्स है, वो एक कम्प्लीटली अलग चीज़ है. बट देन दैट इज काइंड ऑफ वेयर वी प्रेफर टू स्टार्ट. वहाँ से हम लोग ट्रैफिक भेजना स्टार्ट करते हैं अपने फनल के ऊपर, देखते हैं कि वो लोग बाय कर रहे हैं नहीं कर रहे, कितने क्लिक्स आ रहे हैं. फिर देन बेस्ड ऑन दैट हम लोग फनल्स वगैरह चेंज करते हैं एंड देन अल्टीमेटली फिर सेल्स में रिजल्ट करता है वो सारी चीज़ें. तन्मय, अगर हम इस फनल को थोड़ा एलैबोरेट करें ऑडियंस के लिए, तो ये फनल कैसे काम करता है, ये फनल कैसे डिजाइन होती है, मतलब a little bit about the sales funnels that we are actually use these words. अभी तक हमने काफी यूज कर दिया है, हो सकता है किसी को समझ ना आ रहा हो कि ये फनल क्या है, क्या ये कोई टूल मिलेगा या क्या हमें कोई एनालिसिस का कोई जरिया मिलेगा यहाँ पे लैपटॉप में अभी, तो उनको समझाने के लिए कि फनल है क्या एक्चुअली. सो फनल्स हम लोग बेसिकली जैसे अगर आप एक एग्जांपल दूं तो अगर आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हो, राइट, आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हो, आप बर्गर बाय करते हो एंड उसके बाद फिर आपको फ्राइज और कोक अपसेल करते हैं. सो दैट इज काइंड ऑफ एन अपसेल, राइट. वो एक फनल बनता है. सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि आप ट्रैफिक सेंड करते हो, आप मैकडॉनल्ड्स के अंदर जा रहे हो, राइट. उसके बाद आप बर्गर खरीद रहे हो जिस पे आपका प्रॉफिट सिर्फ लेट्स जस्ट से ₹5 का है, क्योंकि आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन भी वहाँ पे काउंट होता है. तो अगर आपका प्रॉफिट सिर्फ ₹5 का है, देन ट्राई एंड अपसेल फ्राइज एंड कोक. सो वो जब सेल करते हो आपका प्रॉफिट इज ₹15 मोर. तो आपका अगर टोटल ऐड करते हो तो ₹20 का आपका प्रॉफिट हो जाता है. तो ऑनलाइन जब भी हम लोग बोलते हैं फनल के बारे में, सो इट्स लाइक अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. जैसा आप वेबसाइट में होते हो तो आपके 10-15 अलग अलग कॉल टू एक्शंस होते हैं, राइट. आपका अबाउट अस पेज है, आपका इंट्रोडक्शन है, करियर्स है, बहुत सारी चीजें आती है. बट फनल में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इट्स अ स्टेप बाय स्टेप थिंग कि आप ऐड देखोगे. फॉर एग्जांपल अमेजॉन का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. अगर आप अमेजॉन का कोई भी इक्विपमेंट बाय कर रहे हो तो अमेजॉन सिर्फ उसी चीज की ऐड दिखाता है आपको, या दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट. सो उसकी ऐड दिखाता है, फिर आप उसके पेज पे जाते हो, देन यू try and buy that product, and then फिर वो लोग आपको कुछ ना कुछ दिखाते हैं that people who are buying this are also buying these with that product together, मतलब people are purchasing that together, right. So this is basically what we call a funnel, कि मतलब एक fixed flow में आप लोगों को लेके जा रहे हो. And not just that, it's also अब तो बहुत ज़्यादा वो varied funnels आने लगे. जैसे ऐसा भी होता है कि एक बार आपने खरीद लिया, उसके बाद अपसेल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बर्गर्स एंड उसके बाद आपके डाउनसेल्स होते हैं. अगर आपने फर्स्ट प्रोडक्ट बाय नहीं किया तो फिर आपको डाउनसेल निकालते हैं, या तो फिर पेमेंट प्लान आपको बता देंगे इफ यू वांट टू गो विद दैट, या वी सेल यू अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट. बट दे वांट टू इंटैक्ट यू विद देयर प्रोडक्ट एंड देयर एवरीथिंग. मतलब आप लीव करके ना जाओ. अगर आप ऊपर नहीं जा सकते तो आप नीचे हमारे साथ रहो, मतलब आपको और अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, राइट.
जैसे मैकडोनल्ड्स का था कि they then brought more children with their toy in the happy meal. तो वो हैप्पी मील में वो टॉयज रखने लग गए थे कि जब उनकी बहुत ज्यादा हो गई थी डिमांड, तो बच्चों को वो टॉय चाहिए हुआ था और बड़ों को बर्गर और वो सब. So these all comes in the funnel only. So funnel is like getting customer to your higher level, like कोई भी उन्हें फ्री चीज दी, या जैसे कि आपने बताया कुछ भी उन्हें इंटाइस करने के लिए, है ना, और उसके बाद धीरे 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 उन्हें अपसेल करो या फिर keep them intact with your product and with your services. So this is what all funnel is all about. Okay. So how this consumer psychology works, like when we are selling online, we set up everything, how to look for that consumer psychology.